Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and safe. My today's topic is again for class 6 English, and the name of the topic is The Shepherd's Treasure, and the page number of your textbook is 117. Let us begin. He asked his servant to bring in the chest. इसने अपने नौकर से पेटी अंदर लाने के लिए कहा. How eagerly the people standing around waiting for the shepherd to be found out. Found out. Found out का मतलब क्या होगा? Found हो गया बुनियाद, और eagerly हो गए शौक से या चाहत से. चारों तरफ खड़े लोग बड़े तेजस से चरवाहे की पेटी की से चोरी पकड़ने के इंतजार करने लगे. But how great was their astonishment. Astonishment का मतलब क्या है? हैरत. And even of the king himself when the chest was opened. मगर जब पेटी खोली गई तो राजा समेत सभी लोगों को हैरानगी का ठिकाना न रहा. नो गोल्ड. गोल्ड किसको बोलते हैं? सोने को. और सिल्वर किसको बोलते हैं? जवाहरात. और ज्वेल्स मोती या कीमती पत्थर. बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट. इसमें सोना चांदी या हीरे नहीं, बल्कि एक कम्बल निकला. एक पुरानी कम्बल निकले वहां से. होल्डिंग इट अप प्राउडली का मतलब क्या है? तकब्बुर से या खुददाराना. द शेफर्ड said, this my dear master is my only treasure. फख्र से उसे ऊपर उठाते हुए चरवाहे ने कहा, मेरे प्यारे आका, यही मेरा एक खजाना है. किसका बोलता था चरवाहा खजाना? ओल्ड ब्लैंकेट को. I always carry it with me. मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ. But why do you carry such an ordinary blanket with you? मगर बादशाह ने इससे पूछा चरवाहे से, तुम ऐसा मामूली कम्बल अपने साथ क्यों लिए फिरते हो? Surely you are the governor of a district, the king asked. बादशाह ने कहा, आखिर तुम जिले के गवर्नर हो. To which the shepherd replied with quiet dignity. डिग्निटी किसे बोलते हैं? अजमत या कदरे अज़त. To which the shepherd replied with quiet dignity. Replied जवाब देना. Dignity अजमत से, कदरे इज्जत. This blanket is my oldest friend. राजा ने पूछा. इस पर चरवाहे ने बड़ी आजिजी से जवाब दिया, ये कम्बल मेरा सबसे पुराना दोस्त है. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. Majesty किसको बोलते हैं? शान को. तो अगर किसी वक़्त महाराज मेरे शाही कपड़े उतारे तब ही कम्बल इसकी हिफाजत करेंगी. How pleased the king was and how impressed the jealous governor became to hear the wise man's reply. अक्लमंद शख्स का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ
اور حاسد گورنر بڑے شرمندہ ہو گئے. وائز کس کو بولتے ہیں؟ دانا کو. Now they knew that the shepherd was indeed. Indeed کا مطلب ہے واقعی. The humblest. humblest کیا ہو گیا؟ حلیم. And the wisest man in the land. In the land. اب ان کو علم ہو گیا. کن کو علم ہو گیا؟ ان جو دوسرے گورنرز تھے کہ چرواہا اصل میں ہی ملک کا سب سے زیادہ حلیم اور عقل مند شخص ہے. The king made him the governor of a much bigger district that very day. اسی دن راجا نے اس چرواہے کو کہیں زیادہ بڑے ضلع کا گورنر بنا دیا، یا اس دن راجا نے خوش ہو کر اس گورنر کو، اس چرواہے کو جو ایک چھوٹے ضلع کا گورنر تھا، بڑے ضلع کا گورنر بنا دیا. ایگرلی شوق سے، فاؤنڈ بنیاد، اسٹانشمنٹ حیرت، پراؤڈلی تکبر سے، ریپلائڈ جواب دینا، ڈگنیٹی عظمت، میجسٹی شان، ایمبیرسڈ پیشیمان ہو گئے، انڈیڈ واقعی، ہمبلسٹ حلیم، گولڈ سونا، سلور جواہرات، جیولز موتی. اللہ حافظ.